Hello students, myself Amit Gupta. Today we are going to start friction part 3. In last video we have discussed some basic problems on friction. Okay. Now today we will continue after that. So the most important concept is if the force applied on the body is along the surface, means like this is your rough surface, and let us take there is friction. Okay, so in this case the normal reaction, which is balanced by gravitational force, when force is just parallel to this surface, then normal reaction is exactly weight of the body. So if we write Fs max or Fk, then we can write mu into n. So n, just take here mg. Now if in any question the force is at some angle theta, okay, so the normal reaction mg just downward, and normal reaction. Now we take the component of force along this direction and along this direction. So the force along horizontal, that is F cos theta, and the force along this direction, that is F sin theta. Now if there is friction, then normal reaction plus this force, which is balanced by mg, means F, the component of F along this direction, जिसके रिस्पेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी. और नॉर्मल रिएक्शन अगर कम हुआ तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आल्सो डिक्रीजेस. ठीक है, तो इस केस में आप नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg की इक्वल कभी नहीं लेंगे. n की वैल्यू इस केस में क्या आएगी, दैट इज mg माइनस f sin थीटा, which is less than the previous value, and that is equal to mg in this case. But if force applied on this body at any angle, then normal reaction will either increase or decrease. For this case, normal reaction, that is equal to mg minus f sin theta. So fs max or fk, that can be written mu into n. तो इस पर्टिकुलर केस में आप नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, mg माइनस f sin थीटा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा. और इवन दैट की एक क्वेश्चन जेईई स्क्रीनिंग में पूछा भी गया था 2003 में. तो याद रखिएगा कि अगर कभी भी फोर्स किसी एंगल पे लेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू वेरी करेगी. इट मे बी mg माइनस एफ साइन थीटा और mg प्लस एफ साइन थीटा. अगर आप फोर्स हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg के इक्वल रहेगा. ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पे हम लोग बात भी करते हैं, और वो एनसीईआरटी और कॉम्पिटिशन लेवल पे भी उस पर हम बात कर सकते हैं. दैट व्हाई पुलिंग इज easier as compared to pushing. Okay, now let's see. Just remember this concept. Now the next concept is why pulling force is easier as pushing. Okay, so take first part. Let us take case 1, that is case of pulling. There is a block placed on a rough surface
and the coefficient of friction, that is mu. Mass of the body is m, so mg will just downward and normal reaction just perpendicular to the surface, and the force applied on this by some angle theta, and this is your pulling force, F pulling. So question is, find the minimum value of force for which the block just slide on this surface. So just take component of this force along horizontal, that is F cos theta, and along this direction it will be F sin theta. Now similarly, as we discussed in last question, here normal relation will decrease by F sin theta, and there is friction between the surface, so friction will act just opposite to the applied force. And for minimum force, let us take the static friction will reach at its maximum value. So now we can write the equation N, which is equal to mg minus F sin theta. Take first equation, and this force which is balanced by Fs max, F cos theta, which is equal to Fs max. Or we can write F cos theta and Fs max, that is equal to mu into n. So mu into n is mg minus F sin theta. So solve force from this equation, we get F sin theta, F cos theta, that is equal to mu mg upon cos theta plus mu sin theta. Okay, see here F is a function of theta because mu mg is constant. Mu is constant and weight of the body is constant, but theta can be variable. Theta को हम लोग क्या करते हैं, change कर सकते हैं. We can change the value of theta. Means we can say here force is a function of theta. In denominator, cos theta plus mu sin theta. If the value of cos theta plus mu sin theta is lesser, then we can say the value of force will be maximum. But in this case, we need minimum value of force for which the block just slide on this surface. So for minimum value of F, we have df by d theta, that is equal to 0. आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ df by d थीटा, बिकॉज फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ थीटा. तो आप f को डिफरेंशिएट करिए थीटा के रिस्पेक्ट में और उसको 0 कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, थीटा. सो वी कैन राइट d by d थीटा, that is mu mg upon cos theta plus mu sin theta, and which is equal to 0. Because mu mg is constant, so we can write d by d theta 1 upon cos theta plus mu sin theta is equal to 0. Now differentiate it. So denominator cos theta plus mu sin theta into derivative of numerator. So it is 1. So derivative of 1 is 0 minus numerator into derivative of denominator, that is minus sin theta plus mu cos theta upon square of denominator, that is equal to 0. As we know, the value of cos theta plus mu sin theta whole square never be 0. This is mathematical rule. Denominator of a function never be 0. So we can write this value into 0, that is equal to 0. Now minus, so we can write sin theta minus mu cos theta is equal to 0, means tan of theta, that is equal to mu.
or theta that is equal to tan inverse mu. For this value of theta, we can say the force will be minimum for which the block just slide on this rough surface. To find the minimum value of theta, just place the value of theta in this equation. We get the value of minimum force. Okay, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. So we'll find the value of F minimum. So F minimum at theta is equal to tan inverse mu, that is equal to mu mg upon cos theta. See, tan theta is given, so we can write tan theta, this is theta, tan theta mu by 1, so it will be 1 plus mu square. Now we can write sin theta that is equal to mu upon square root of 1 plus mu square, and cos theta that is equal to 1 upon square root 1 plus mu square. Now place this value in this equation. So cos theta that is 1 upon square root 1 plus mu square plus mu sin theta. So mu into mu upon square root 1 plus mu square. Now simplify this. Mu mg upon 1 plus mu square upon LCM 1 plus mu square. So we can write F minimum that is mu mg upon square root of 1 plus mu square. So this is the minimum force for which the block just slide on this rough surface. Okay, now the question is why pulling is easier. So if we see the force F pulling, whose one component will support the normal reaction, so the value of normal reaction will decrease, and according to law of static friction, if normal reaction is lesser, then the value of static friction become lesser. So by this amount of force we can pull this block easily. Okay, now again we see why pushing is difficult. किसी ब्लॉक को अगर आपको पुश करना है वो डिफिकल्ट क्यों है उसके लिए बात करेंगे. सो जस्ट राइट डाउन. And this question also asked in NCERT and also given in NCERT book. Why pulling force is easier as compared to pushing. Okay. Now discuss about pushing of this block. So just take case 2. Case 2, case of pushing. Now if we push this block by force F at an angle theta, so as we push this block along this direction, then what happen with respect to normal reaction? This is theta, this is theta. So it will be F cos theta and F sin theta. Weight of the body, that is mg. Okay. Now see here, the component of F sin theta added with this weight of the body, by which the normal reaction of this block will increase
if the normal reaction of this block will increase, then according to law of static friction, the friction force between the surface will also increase. So F cos theta which is balanced by Fs max. So according to picture we can see पुलिंग इज इजियर. पुलिंग के केस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम हो जा रही है, तो आप कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. एंड फ्रिक्शन अगर कम हुआ तो बॉडी को हम इजिली पुल कर सकते हैं. जबकि जब आप बॉडी को पुश कर रहे हैं तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ड्यू टू एफ साइन थीटा. सो इन दिस केस नॉर्मल रिएक्शन आपकी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है. अगर नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है इट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी. और इन स्टैटिक फ्रिक्शन अगर इंक्रीज कर गया तो आपको पुश करने में ज्यादा, यानी ब्लॉक को मूव करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा. तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि पुलिंग इज इजियर एज कंपेयर टू पुशिंग. ठीक है. नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम फोर्स फॉर दिस वन. सो एफ साइन थीटा प्लस एम जी दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन. सो एन दैट इज इक्वल टू एम जी प्लस F sin theta and Fs max which is balanced by F cos theta. Now find the value of F. So this is mu into N. N is mg plus F sin theta that is equal to F cos theta, or we can write F is equal to mu mg upon cos theta minus mu sin theta. So in first case the value of F that will come mu mg upon cos theta plus mu sin theta. तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, यानी उस केस में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, आपको कम लगेगी. ठीक है. सो F पुलिंग कितना था, that is mu mg upon cos theta plus mu sin theta, and F pushing इस केस में कितना आ रहा है, that is mu mg upon cos theta minus mu sin theta. So from these two equations we can see the value of denominator in this case is greater, so this force will be lesser. And in this case the value of cos theta minus mu sin theta is lesser, so this force is greater. So we can write F pushing is greater than F pulling. तो पुश करने के लिए, आपको ब्लॉक को पुश करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और पुल करने के लिए आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट कम होगी. सो this is the proof of why pulling is easier as compared to pushing. Now similarly we can find the value of F, that is mu mg upon cos theta minus mu sin theta. Here F is a function of theta, so for minimum value of force we have df by d theta that is equal to 0. Now differentiate it, then we further get tan theta that is equal to mu. So we can write F minimum that is mu mg upon cos theta. Tan theta is given, so theta mu 1 square root of 1 plus mu square. So cos theta is 1 upon square root 1 plus mu square minus mu into mu upon square root of 1 plus mu square. So F minimum that is equal to mu mg upon 1 minus mu square upon square root 1 plus mu square. Okay. So this will be the value in this case. क्लियर. चलो
तो मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेता हूं और वो आपको बेसिकली बेसिक ही लगेंगे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, राइट डाउन। Okay, now take a question which asked in ITJ 2003. Question is, a block and the mass of block is m is equal to root 3 kg and the friction coefficient, that is mu, that is 1 upon 2 root 3, and the pushing force is F and this angle is 60 degree. And question is, what is the maximum value of the force F such that the block shown in the arrangement does not move? So question is, find F max for which the block does not move. ओके, तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यही देखना है कि फोर्स इज, दैट इज पुशिंग फोर्स विच इंक्लाइंड विद द हॉरिजॉन्टल एट 60 डिग्री। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg की इक्वल नहीं होगा, ये पॉइंट सबसे पहले आपको याद रखना है। सो mg नॉर्मल रिएक्शन और यहां पर फोर्स का डायरेक्शन कंपोनेंट, दिस इज 60 डिग्री, so this is f cos 60 degree and along this f sin 60 degree. So we can write the equation and the friction force, because f cos 60 is in this direction, so friction force, that is fs max, because in this question the block does not move, so f cos 60 which is balanced by fs max and normal reaction, that is equal to mg plus f sin 60. Now place this value, so f cos 60 is half, that is mu is 1 by 2 root 3 and mg mass is root 3, take g as 10 plus f sin 60 is root 3 by 2. Okay, so 2 now multiply, so f can be written 10 plus f by 2, so f by 2 that is equal to 10, so the f we can write maximum or minimum, that is equal to 20 Newton. Means if the value of force is equal to 20 Newton, then the block does not move on this surface. Okay, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि उनको दिमाग में रहता है कि ठीक है फोर्स अप्लाई किया और जैसे वो म्यू इंटू एन की वैल्यू प्लेस करते हैं तो वहां पर एन की वैल्यू mg प्लेस कर देते हैं और अल्टीमेट हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इवन दैट कि 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा भी था कि अगर n की वैल्यू अगर आप mg लेते हैं
तो आंसर भी आपका उस क्वेश्चन पे मैच हो रहा था। ठीक है, तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि इन केस अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल है सो नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg। इन केस फोर्स इंक्लाइन पर है तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, इधर mg माइनस एफ साइन थीटा और mg प्लस साइन थीटा। ओके, जस्ट चेक इट।